Assalamu alaikum. Social media with graph theory. We are thinking about a platform like Facebook, Instagram, or Twitter, WhatsApp. Take an example like a Facebook. यूज़र जो होते हैं वो एक नोड्स होते हैं. फेसबुक जैसे चलाते हैं उसमें यूज़र्स अकाउंट बनते हैं. एक जो अकाउंट बनता है वो एक यूज़र होता है. वो यूज़र इक्वल टू है एक नोड के. मतलब ग्राफ थ्योरी में एक वर्टेक्स कह सकते हैं या एक नोड कह सकते हैं. ईच पर्सन इज अ पॉइंट इन द ग्राफ. कनेक्शंस जो होते हैं वो एजेस होते हैं बिटवीन टू नोड्स. इसमें कनेक्शंस लाइक फेसबुक में आ जाती हैं. फ्रेंडशिप्स, फॉलोज, लाइक और कमेंट्स, ये कनेक्शंस हो जाती हैं, मतलब एज बनती हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. आई फॉलो ग्राफ थ्योरी टीचर ऑन अ फेसबुक. देन देयर लाइन एज बिटवीन माई नोड एंड द टीचर नोड. जो दो नोड बनी, मैं आप टीचर को फॉलो करूँगा, से मेरी नोट अलग होगी और आपकी नोट अलग होगी, टीचर की नोट अलग होगी. तो वो जो मैं आपको फॉलो करूँगा वो एक लाइन बनेगी इन बिटवीन अस, वो होगी एक एज. देन नेक्स्ट स्लाइड. ग्राफ थ्योरी इन एक्शन. ग्राफ थ्योरी हेल्प अस टू स्टडी एंड एनालाइज द सोशल मीडिया नेटवर्क्स. जैसे पहला होता है फाइंडिंग इन्फ्लुएंसर्स. लाइक इसमें एक सेंट्रल नोड होती है. ये हम उसको कहते हैं जो, जैसे कोई एक सेलिब्रिटी है, कोई एक फेमस बंदा है जिसके कनेक्शंस बहुत या फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट नोड उसको कहते हैं. दूसरा आता है कम्युनिटीज़. कम्युनिटी में क्लस्टर आ जाता है जिसमें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं. जिसमें कम्युनिटी में ऐसे व्हाट्सएप पर ग्रुप बनते हैं, फेसबुक का एक ग्रुप बनता है ऐसे. दूसरा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड. पाथ्स, मतलब व्हेन समवन पोस्ट अ न्यूज़, ग्राफ थ्योरी प्रेडिक्ट हाउ फास्ट एंड हाउ फार इट विल स्प्रेड. मतलब जब इंफॉर्मेशन स्प्रेड जो कहते हैं हम, एक पाथ है. जैसे किसी भी एक ग्राफ में पाथ होता है, वो पाथ क्या करता है कि ईच वर्टेक्स से ट्रेवल करता है किसी एजेस के थ्रू. ऐसे ही इसमें भी होता है कि कोई भी अगर न्यूज़ कोई पोस्ट कर रहा है तो वो कौन कौन से नोड्स के पास जाएगी और उन नोड्स के बिटवीन इन दोनों का कनेक्शन क्या है. लास्ट, रिकमेंडेशन सिस्टम. सोशल मीडिया में एक ये भी आता है कि सोशल मीडिया सजेशंस लिस्ट पीपल में जैसे फेसबुक पे आता है. इनमें भी कनेक्शंस होती हैं, इनमें भी नोट्स बनते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. वाई ग्राफ थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट. ग्राफ थ्योरी इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि हेल्प कंपनीज नो हाउ टू टारगेट फॉर हु टू टारगेट फॉर एड्स. इसमें कि कंपनी, जैसे मेरी एक कंपनी है, मैं बंदे हायर करना चाहता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर एग्जांपल. तो मैं मतलब कौन से स्टूडेंट्स को या कौन से पीपल को टारगेट करूँगा, ये सोशल मीडिया मुझे हेल्प करती है इस चीज़ को. मतलब ग्राफ थ्योरी के थ्रू सोशल मीडिया मुझे इस चीज़ से हेल्पफुल है. दूसरा, हेल्प्स पॉलिटिकल पार्टीज नो विच लीडर कैन इन्फ्लुएंस मोस्ट वोटर्स. मतलब इसमें जो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉलिटिकल बंदा है, उसके फॉलोअर्स के से पता चलता है कि इसके वोटर्स कितने हैं. हेल्प प्लेटफॉर्म स्टॉप द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ और हार्मफुल कंटेंट. ऐसे है कि फॉर एग्जांपल कोई भी सेलिब्रिटी है, किसी भी मतलब अगर उसके लिए कोई गलत न्यूज़ कोई छाप रहा है तो वो अपना ओरिजिनल अकाउंट बन के वो क्लियर कर सकता है कि मुझे ये मेरी ये मतलब फेक न्यूज़ है या कोई भी गलत कंटेंट है. कंक्लूजन इसमें यह आ जाता है, ग्राफ थ्योरी वर्क इन सोशल मीडिया बाय ट्रीटिंग यूज़र एज अ नोड एंड देयर रिलेशनशिप एज अ कनेक्शंस. वो एज होती है. Second, it helps find influencer, detect communities, and study how information is spread across a network. Hello, my name is Agha Abrar, and today I am here to discuss about influence maximization. So, what is influence maximization? Influence maximization means finding set of people in a nodes in a graph who can spread information or influence to other largest number of others in a network. So we have a nodes. We have a nodes means vertices, people. These are like people or accounts on a social media. Edges means connections. We have friendships and followings or communication links. So what is our goal? Our goal is to choose the best nodes so that the influence spreads to many as other as possible. So let's discuss the example. Imagine a graph with 10 nodes means 10 peoples. Not all peoples are equally powerful in spreading influence. Some have many connections, some have very few.
Let's suppose if a company has only three samples to give away and they choose three most connected nodes, the product's information will spread across the whole network. If they choose three nodes with very few connections, the influence will stay limited to the small group. That's exactly the problem influence maximization helps to resolve. So let's discuss some real life examples. So we have a real example marketing. So suppose companies select brand ambassadors who can reach the maximum audience. Example, if a Pepsi sponsors a celebrity like Rob Kohli, the product instantly reaches million in a graph theory terms. So celebrity has a high degree centrality node. So we have a epidemiology, disease control means used to identify key individuals to vaccinate or isolate. Example, in a village of 100 people, 5 people interact with almost everyone. Vaccinating only those 5 can prevent the disease from the spreading across the entire network. We have another example, politics. Campaigns first target leaders or influence in a community. We have example, one local leader and he influences his 200 followers. In the graph, this leader is like hub node. We have a fake news detection, helps finding who is spreading misinformation the farthest as the fastest means. Example, one WhatsApp group admin is connected to 10 different groups. Stopping to that person can reduce the spread dramatically. So this is all about the influence maximization. Further, my friend will explain. Thank you so much. Hi, my name is Mir Khalil, and as you have learned about the influence maximization, which Aga has presented, and now I will present the technical details about the topic, that how we implement that at the technical level. So here you can see that we have nodes, which are also called vertices, and these are representing the people in the network. And also these nodes are connected with each other, which is usually called edges in graph theory, and the edges will represent a relationship between the nodes, between the peoples. So it will be either a friend, there will be a connection between two nodes, either they will be friends, or either one will be the following of other, or maybe both will follow each other. And so how we calculate that which node is influenced by which one, or which node is influencing which one and how much. So here we use the weights. So here we have strength of influence. So for example, if two people are connected to each other and they are close friends, then there is a high weight, and the weight represents how much influence the one node will have on another. So if they are friends, then there is a high possibility that they will have a great influence on each other. So here we have few models with a combination of probability and graph theory. So first one is independent cascade model. And what we do in this, then when a node is influenced, it has a chance to influence each neighbor. So all those nodes which are connected with this node will also be influenced. And you can imagine it like an infection. So when one cell is infected in our body, it automatically influences other cells around it, and also make them sick. So it works exactly like that, like infection. Influence spreads like an infection. So infection spreads all over the body, step by step, and in a contagious manner. Exactly the same way, the people are influenced in a contagious manner. So if one node is influenced, then it will automatically influence those nodes which are connected to this one. And the second model
is a linear threshold model, and it is a little bit different than the previous one. In this, we specify a certain threshold, and if that is meet with the requirements, then the other nodes will automatically influenced by that node. When enough neighbors are influenced, the node also gets influenced. So as we have seen the both aspects at the abstract level and also at the technical level. So graph theory helps influence maximization by representing social connections as a graph and using mathematical models like centrality of the node, cascades of the effect that it has on other nodes, and thresholds that when a certain node will be influenced by other nodes to find the most influential nodes that maximize spread. Thank you very much.